Hello students, welcome you all on behalf of residents. Today's Indian Olympiad qualifier chemistry exam happened, and let us see what are the questions given in this paper and what type of questions and what is the level of paper today. The first question in physical and inorganic part, it is given which of the following reactions is not an example of Lewis acid and Lewis base reaction. You know, Lewis acid, it is an electron pair acceptor, Lewis base, it is electron pair donor. In between these two, the reaction is the formation of coordination bond. So, in the given options, the coordination bond is not present in the B, C and D. If you say in the B, C, D, in these three reactions there is a coordination bond, and it is asked which is not the example of Lewis reaction. So, the first one is only not the example of Lewis acid base reaction. Next, let us come to the third question. A student intended to prepare 100 milliliters of a 10 ppm solution of K plus from KCl. He made appropriate calculations, weighed the salt accordingly and prepared the solution. However, after making the solution, he realized that the salt he used was KNO3 and not KCl. The concentration of K plus in ppm in this prepared solution is. एक स्टूडेंट ने 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बना लिया, गलती से पोटाशियम क्लोराइड के जगह पोटाशियम नाइट्रेट लिया है। तब उस सॉल्यूशन में इन्होंने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया उसमें K प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन तो 10 ppm आ गया। तो बाद में पता चला ये पोटाशियम क्लोराइड नहीं है, पोटाशियम नाइट्रेट है। तो इसमें हमको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K प्लस इन द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, बिकॉज ही मेड कैलकुलेशन by assuming it is the potassium chloride. So, we have to calculate what is the actual concentration of K plus in this solution. So, let us see, concentration in ppm can be calculated by this formula, that is weight of solute upon volume of solution into 10 power 6, and potassium ions concentration can be equal to weight of potassium ions upon 1000, it is 10 cube into 10 power 6, and you can see weight of potassium ions obtained is 10 power minus 2 grams. And if you calculate the moles of potassium ions, these are 10 power minus 2 upon its atomic mass 39, and you will get moles of KCl as 10 power minus 2 by 39. Now, the number of moles of potassium ions will be equal to the weight of KCl, and it will be equal to weight of KCl, number of moles of KCl will be equal to number of moles of potassium ions. So, number of moles of potassium ions and number of moles of KCl are same, and we are now calculating weight of KCl by multiplying its molecular weight. Now, it is equal to 10 power minus 2 by 39 into 74.5 grams. It is the weight of potassium chloride actually. Now, this weight is equal to potassium nitrate weight. क्यों? क्योंकि बच्चे ने ये कंसिडर किया है, स्टूडेंट ने ये पोटाशियम नाइट्रेट वेट जो भी इतना वेट लिया है वो पोटाशियम क्लोराइड समझ लिया। अब यहाँ मोल्स ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पोटाशियम नाइट्रेट मोल्स विल बी इक्वल टू by dividing with its molar mass, weight upon molar mass you will get the moles of potassium nitrate. And now, the number of moles of potassium ions will be equal to number of moles of potassium nitrate. So, number of moles of potassium ions are this. Now, we are again calculating the weight of potassium ions. Now, it will be equal to 10 power minus 2 into 74 upon 101 grams. Now, the concentration of potassium ions in ppm again we are calculating. Now, we will get the 7.31 grams of potassium ions in ppm, 7.31 ppm. Now, the answer for this question you will get
first answer. This is given in ppm, it is 7.37, and here we are calculating, it is not in grams, it is in ppm. Next one, another question from acidic and basic nature and amphoteric nature of oxides. See, oxide A is soluble in NaOH, that means that should be acidic in nature, and oxide B is soluble in HCl, that means it should be NaOH, I mean basic in nature, and oxide C is in both, that means it should be amphoteric. So, we have to select the oxides which are here, it is soluble in NaOH means it should be acidic nature, it is soluble in HCl means it should be basic in nature, it is soluble in oxide, this oxide C is soluble in both means it should be amphoteric nature. So, the given options, in the given options you can see carbon dioxide is acidic in nature, and sodium oxide is basic in nature, and zinc oxide is amphoteric in nature. And in the remaining options you can see CO2 is acidic, SO2 is acidic, PbO2 is amphoteric, and whereas here in this zinc oxide is amphoteric and SnO2 is also amphoteric, and barium oxide is basic and SO2 is acidic, but Na2O is basic. That is why the appropriate answer is, the correct answer is B. Next, another question related to this electrochemistry. If the ratio of concentrations of oxidized and reduced form of a species, it is form of a species in an electrochemical reaction can be given as 1 into 10 power minus 3, the correct expression among the following at 25 degrees Celsius is. You see, if an element is oxidizing, then it is said to be the reduced form, it is said to be the oxidized form, and according to Nernst equation you can write this as EOP, that means oxidation potential is equal to standard oxidation potential minus 0.05 by 0.059 by n log oxidized form upon reduced form. Here this ratio is already given, so substitute this and you will get E minus E naught equal to 3 into 0.059 by n. Okay. Next, it is related to significant figures. Very easy question. Among the following numbers, the one which all the zeros are significant is. It is very simple question. Zeros located to the left of the first non-zero digit are not significant. So, you can observe in A, B and D, non-zero figure means 4. इसके लेफ्ट साइड में जो भी जीरोस है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए ये बी डी नहीं होगा और सिर्फ सी में ही सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो भी जीरोस है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो इसलिए जीरोस लोकेटेड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सो द करेक्ट आंसर कैन बी सी. And next one, this is belongs to the coordination compounds, and the correct order of CFSE of the following complex ions is, and this crystal field stabilization energy depends on the splitting, and here the splitting also depends on the number of ligands and the charge on the metal ion. So, here if you see in the given complexes, iridium is the 5D series element, and here these three are octahedral complexes. Zinc is the tetrahedral complex, and you know the splitting is less in case of tetrahedral complexes when compared to octahedral complexes, because here the splitting you can observe in octahedral complexes is T2G EG, and in tetrahedral complexes it is E and T2 splitting.
Okay. And this splitting is less in tetrahedral complexes, this splitting is more in octahedral complexes. So, among all these four, the least splitting can be observed in case of this zinc complex. And now, if you compare these three, iridium is 5D series, so the splitting will be more in case of the 5D series element. And after that, if you compare these two are having the same metal ion, but with different charges, cobalt here plus 3, cobalt here plus 2. So, if the charge is more on the metal ion, then the splitting will be more. So, the correct order can be now equal to iridium is having, it is not A, iridium is having more splitting than cobalt NH3 6 times 3 plus, and next cobalt 2 plus complex, and next zinc 2 plus complex. So, answer is 3. Sorry, answer is A only. Answer is A. Next, which of the following statements are correct? The first one given as half life is 50% of the total time taken for the completion of the reaction. No, it is time taken to become half of the initial concentration. Next, collision frequency Z, which is the number of collisions per second per unit volume, up to this is okay, but it is same as the rate constant of the reaction, it is not correct. Next one, a change in the activation energy of reaction at a particular temperature will result in proportional change in the rate and rate constant of the reactions at the same temperature. And the fourth statement is all first order reactions are not unimolecular, and fifth statement is for a zero order reaction slope of plot versus plot of T half of versus initial concentration will be 0. In all these statements, the correct statement can be all first order reactions are not unimolecular reactions. Okay. All first order reactions are not unimolecular reactions. For example, if you take 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, it is the first order reaction, but it is not unimolecular. And if you take pseudo first order reactions, there is also a order is 1, but they are bimolecular reactions. So, this statement is only correct, and remaining all the statements are incorrect. Why? You can see here K equal to A into e power minus E A by R T. Now, A means Arrhenius factor, it is equal to P into Z, it is orientation factor and collision frequency ka product. Now, collision frequency means what? It is the number of collisions per unit volume per unit time, and it is not same as the rate constant. So, this statement is, that is why incorrect. And if you see the third statement, that is K is directly proportional to e power minus E A by R T, and here temperature, it is related to the temperature like this, and here the statement is given as a change in the activation energy of the reaction at a particular temperature will result in proportional change in the rate and rate constant of the reaction at the same temperature. This is also incorrect. Next, for a zero order reaction, the half life and initial concentration C naught are given as T half equal to C naught by 2K. This is the relation between half life and C naught. ठीक है. अब यदि हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो T half और C naught के बीच में, T half और C naught के बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे तो it will be a straight line with a slope equal to 1 by 2K. Straight line passing through origin with a slope equal to 1 by 2K. It is y equal to mx type. So, if you plot a graph between T half and C naught, you will get a straight line with slope equal to 1 by 2K. So, आपको दिया है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्लोप 0 है, नो 0 नहीं है, ये 1 by 2K है स्लोप. तो नेक्स्ट,
D block compounds, that is potassium dichromate and potassium chromate. It is a orange red color, it is yellow color. और इसमें आप देख सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का +6 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम के लिए 3d0 4s0 कॉन्फ़िगरेशन है. अब इसमें आप देख सकते हैं d ऑर्बिटल इज वेकेंट. सो d ऑर्बिटल वेकेंट होने की वजह से इसमें d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो dd ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है. तो फिर इसमें क्यों कलर एग्जिबिट हो रहा है? इसका कारण है इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण. दैट मीन्स चार्ज ट्रांसफर फिनोमिनन. तो चार्ज ट्रांसफर फिनोमिनन क्या होता है? यहाँ जो ऑक्सीजन लिगैंड्स है, ये ऑक्सीजन लिगैंड से, ये ऑक्साइड लिगैंड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएगा टू द मेटल आयन. इसको बोलते हैं लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और इसकी वजह से ये कलर शो करेगा लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से. और इसी को हम सिंपली बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इन पोटेशियम क्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट. और पोटेशियम परमैंगनेट में भी यही होता है, तो इसी की वजह से वो पर्पल कलर शो करेगा. नेक्स्ट वन, 1 mole of neon and 1 mole of argon are stored in 2 separate containers 1 and 2 at temperatures T and 2T respectively. If both gases are assumed to be behave ideally, then which of these statements are correct? We have to select. Now you see, if you are taking kinetic energy, it is equal to 3/2 nRT, and if you take 1 mole of neon and 1 mole of argon and temperature are directly proportional to T here for neon, and it is 2T because for argon temperature is given as 2T. Now if you observe, kinetic energy is 2 times to that of second one, kinetic energy equal to first one kinetic energy के डबल हो जाएगा. एंड एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की फार्मूला क्या है? इट इज √8RT/πm. and now average velocity of first gas, that is neon gas, is directly proportional to T/20, and for that of second gas is also directly proportional to 2T/40. Now it is cancelling and you are getting average velocity of argon gas is also √T/20. So both are having same average velocity, but kinetic energy for second gas is twice that of first gas. So in these given options, you can see kinetic energy of the gas molecules in 2 will be twice that in 1, and average velocity of the gas molecules in both 1 and 2 will be same. So the correct answer can be C. Next one, see this question. When 0.805 grams of potassium salt given CH2 n times COOK twice of a basic organic acid was reduced and 0.323 grams of potassium was obtained, what is the molar mass of the acid? Now from this salt we are getting potassium ions, and here from 1 mole of salt we are getting 2 moles of potassium ions. So its mass is given, its mass is also given. So from this we are calculating number of moles. 2 into number of moles of salt will be equal to number of moles of पोटेशियम आयंस के बराबर होगा. तो इसलिए हम ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास अपॉन मोलार मास. मोलार मास इक्वल टू 14n, n टाइम्स है ना, 14n प्लस इसका मास है 166 मोलार मास. सो 0.323 अपॉन इनका एटॉमिक मास 39. इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं. तो इक्वेट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा number n value. On solving you will get n value 2, and now the molar mass of the acid क्या है पूछा है. salt तो आपको पता है ये salt है, यहाँ पोटेशियम आयंस इसलिए आ रहा है, ये एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होने से साल्ट बन गया. तो इसलिए ये पोटेशियम आयंस को H से रिप्लेस कर लो, इसका एसिड की फार्मूला आएगा
तो ये एसिड की फार्मूला है CH2 twice COOH twice that equal to 118. If you calculate the molar mass, you will get 118. Next one, among HCl, HOCl, HOClO2, HOClO3, which cannot undergo disproportionation reaction. So, disproportionation reaction matlab in the given compound the same element if undergoes oxidation and reduction, that is said to be the disproportionation. Here you can see HCl, it is in -1 oxidation number state, and in HClO4 chlorine is in +7 oxidation state, and in the HClO hypochlorous acid it is +1, and in chlorous acid it is +3, and in chloric acid it is +5. Now, in these three, chlorine can go to the lower oxidation state and chlorine can go to its higher oxidation state. That means, these three can undergo disproportionation. That means, these can undergo reduction or these can undergo oxidation, but HCl, it is already in its lower oxidation state. So, it cannot go beyond this lower oxidation state, and chlorine in this, it is already in its higher oxidation state. So, chlorine cannot go beyond +7. So, that is why here HCl and HClO4 both do not undergo disproportionation. Now, the easy question, the electronic transition in helium plus ion that will occur at the same wavelength as that of the n equal to 2 to n equal to 1 transition in hydrogen atom. You know, change in energy during the electronic transition equal to -13.6 into Z square into 1 by N1 square minus 1 by N2 square. Now, here the energy change will be same as that of in hydrogen will be equal to that of in helium plus. So, in which case this transition will give you the same wavelength or same energy, that can be calculated by using this formula, and you can observe if the transition in case of hydrogen is taking place in between 2 to 1, then the energy change will be equal to the same as that of in 4 to 2 case. So, 4 to 2 केस में ट्रांसिशन हो गया तो फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन जंप किया तो तब जो एनर्जी चेंज है यहाँ 2 से 1 को जंप किया तो तब उसके एनर्जी चेंज के बराबर हो जाएगा. एनर्जी बराबर मतलब इसमें वेवलेंथ भी बराबर होगा, बिकॉज इट इज इक्वल टू NHc by lambda, that means number of photons है ये Hc by lambda. Lambda can be same in these two cases. If energy is same, lambda can be same. Now, this is also another question from coordination compounds. Already one question is given and this is the second question. In this, the number of stereoisomers is maximum for, in the given complexes, the maximum number of stereoisomers you can observe for this third one, because here you will get 3 geometrical isomers. It is M, AA, A2, B2 type complex, and for this 3 geometrical isomers, and among that 3, one is having optical activity, and that optical active isomer will have dextro and levo isomers. Total stereoisomers you will get 4. So, for this maximum number of isomers you can obtain, and remaining A, B, C, D, in this A, B and D are getting 2, 3 and 2 stereoisomers. Next question, it is also from atomic structure. Already one question you seen, and this is also another question from atomic structure. Maximum number of electrons with ms equal to half, which can be accommodated in subshells having total 3 nodes is. Total number of nodes is equal to n minus 1. Total number of nodes can be equal to n minus 1, that is equal to 3. So, n value is 4. So, n value is 4 means
total possible electrons in n equal to 4 is 32, 2n square formula. So 32, but only with spin quantum number half कितने electrons होगा. So among 32 electrons आधे electrons तो प्लस हाफ एंड आधे इलेक्ट्रॉन्स के लिए माइनस हाफ होगा स्पिन क्वांटम नंबर. तो इसलिए इसमें प्लस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 16. नेक्स्ट वन, एन आयनिक स्पीसीज M3 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CuCl2. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है Cu प्लस 2 Cl माइनस. सो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 63 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा. और ये 63 इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर बोल रहे हैं M3 प्लस के. तो M में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा 66. और इसमें ये 66 M में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स भी होगा. न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स भी होगा. तो इसलिए M के प्रोटॉन्स की नंबर भी 66 है. अब यहाँ आपको दिया है Z+2 न्यूट्रॉन्स भी होता है. तो ये Z वैल्यू है, ये Z वैल्यू है. तो Z+2 न्यूट्रॉन्स मीन्स ये 68 हो गया. और मोलार मास कितना हो गई. अब मोलार मास मीन्स प्रोटॉन्स नंबर एंड न्यूट्रॉन्स नंबर यू विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 134 हो गई. Sorry. Now it is a beautiful question and it is of part 2. For the given compound, the percentage of S character of phosphorus hybrid orbitals which contribute to various bonds are given in the table below. And you can observe double bond P double bond O is having more percentage of S character and PBr is having less than 20%, PO is having 20% S character, right. It is getting more percentage of S character and here phosphorus is sp3 hybridized, it is sp3 hybridized and here it is 40% is S character is here only, and that means in these three the S character is less obviously. और इसमें ये S character इसमें भी और कम बता रहे हैं और ये दोनों में 20% बता रहे हैं. और ये क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ब्रोमीन इज द लार्जर एटम. तो ये लार्जर एटम की वजह से इसमें ये PBr बॉन्ड के लिए S कैरेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा. और यहाँ ये आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड, वो ये डबल बॉन्ड ज़्यादा स्पेस चाहिए ये डबल बॉन्ड बनने के लिए, और मोरओवर ये बैक बॉन्डिंग है. तो इसलिए यहाँ ये S कैरेक्टर यहाँ P डबल बॉन्ड वो में ज़्यादा है. और इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये S कैरेक्टर ये दोनों में ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये ज़्यादा लिया तो ये तीनों में कम ही होगा. तो यहाँ आपको बता दिया है ये PBr में लेस दैन 20 है. ये क्यों लेस दैन 20 हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ ये ब्रोमीन लार्जर एटम की वजह से. और इसके ऑप्शंस क्या दिया है देख लो. द डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ऑफ वेरियस phosphorus bonds could be due to, first one, the large size of bromine atom. Yes, due to the large size of bromine atom the bond character here, that is percentage of S character will be less in this PBr bond. And the large electronegativity difference between phosphorus and oxygen atom, large electronegativity difference between phosphorus and oxygen atom, no. Increased overlap of sigma orbitals of terminal PO bond, yes, इसमें sigma bond of terminal oxygen bond, इसमें sigma orbitals overlapping ज़्यादा होगा, yes, इसकी वजह से भी वहाँ S कैरेक्टर ज़्यादा है. और स्ट्रांगर कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ PO इन साइक्लिक ऑक्सीजन एटम, यहाँ तो स्ट्रांगर कोवलेंट कैरेक्टर तो नहीं है, क्योंकि ये S कैरेक्टर ज़्यादा है मतलब वो स्ट्रांगर हो जाएगा. तो ऑब्वियसली यहाँ S कैरेक्टर कम है तो ये वीकर ही होगा. तो इसलिए यहाँ ये PO ऑक्सीजन बॉन्ड्स स्ट्रांग कोवलेंट कैरेक्टर बता रहे हैं, ये तो नहीं हो पाएगा, ये वीकर ही होगा, क्योंकि यहाँ P डबल बॉन्ड वो के लिए ज़्यादा S कैरेक्टर आ रहा है, तो इसलिए वहाँ कोवलेंट कैरेक्टर आप ज़्यादा ले सकते हैं. नेक्स्ट वन 27th,
At room temperature, NaCl and KCl were taken in equal masses and dissolved in equal volumes of water in two separate closed containers 1 and 2 respectively. Of the following correct options is are. अब इसमें यहाँ दोनों को हम इक्वल अमाउंट में लिया है तो ये मोल्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इक्वल अमाउंट में लेने से मोल्स तो इक्वल नहीं होगा क्योंकि इनकी मोलार मासेस डिफरेंट है तो मोल्स भी डिफरेंट है। तो इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किसकी मोल्स ज़्यादा है, NaCl की मोल्स ज़्यादा है KCl से, तो इसलिए आपको मोल्स ज़्यादा है तो मोलैरिटी भी हम कंपेयर कर सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ NaCl ज़्यादा होगा KCl से, ठीक है। अब इसमें ये वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों के लिए तो सेम ही है, तो इसलिए हम यहाँ मोल्स इक्वल नहीं है तो यहाँ मोलैरिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं और इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बोथ केसेस इज इक्वल सो वी कैन कंपेयर मोलैरिटी आल्सो। एंड इन द थर्ड कंटेनर, यहाँ ये आपको दिया है थर्ड कंटेनर में if 1 and 2 are completely transferred into another container 3, the Cl minus ions concentration in third will be equal to that of 1 and 2, equal to that of 1 and 2. It is 1 and 2 के बराबर होगा बता रहे हैं, 1 and 2 में जो क्लोराइड आयन्स है उसके सम के बराबर होगा। नो, सम ऑफ क्लोराइड आयन्स इन 1 and 2 के बराबर नहीं होगा क्योंकि थर्ड कंटेनर में क्लोराइड आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन इसके एवरेज हो जाएगा, तो इसलिए ये थर्ड ऑप्शन भी सही नहीं है। अब इसमें एज मोल्स ऑफ NaCl इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ KCl, वेपर प्रेशर की बात करें जहां मोल्स ज़्यादा है वेपर प्रेशर कम होता है तो वेपर प्रेशर्स को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन से एक बार आप अब देख ले। टू कंपेयर मोलैरिटीज 1 and 2, masses of both the solutions need to be known. Yes. अब इसमें molecules cannot be compared without measuring the mass of water added in each case, and case third option, if 1 and 2 are completely transferred into another container 3, Cl minus ions concentration in third will be sum of that, yes, sum of that in 1 and 2, and fourth, information given is sufficient to compare the vapor pressure in 1 and 2. So इन options में आपको यहाँ fourth option आप देख सकते हैं, ये fourth option सही है। Next one, 29th. The resonance structure of SCN minus are given below along with the SC and CN bond lengths. यहाँ SC और CN bond lengths तो दिया है, अब यहाँ देख सकते हैं ये resonance structures of these, and यहाँ ये पूछा है among the following incorrect statement are. इसमें यहाँ हम फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट किया है पहले, तो फॉर्मल चार्जेस आप देख सकते हैं सल्फर का फर्स्ट स्ट्रक्चर में 0, कार्बन का 0 और नाइट्रोजन का तो -1, एंड सल्फर का यहाँ -1, कार्बन का 0, नाइट्रोजन का भी 0, और सल्फर का +1, कार्बन का 0, नाइट्रोजन का -2। इसमें जिस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मिनिमम फॉर्मल चार्जेस होता है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर में, तो इसलिए ये 1 and 2 में मिनिमम चार्जेस है व्हेन कंपेयर्ड टू थर्ड वन। तो आपको ये तीनों स्ट्रक्चर्स में 1 and 2 स्ट्रक्चर्स की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अब ये दोनों में भी ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये सेकंड वाले ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर्ड टू 1। तो अब हम आएंगे यहाँ ऑप्शंस में। द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स 1 and 2 इज मोर इंपॉर्टेंट दैन दैट ऑफ फ्रॉम स्ट्रक्चर 3। Yes, it is correct. The formal charge on sulfur in structure 3 is 0. Structure 3 में formal charge on sulfur 0 बता रहे हैं, no, it is +1. The degree of contribution of these structures is in the order 1 greater than 2 greater than 3. No, it should be 2 greater than 1 greater than 3.
Next, the formal charge on nitrogen in structure 2 is 0. If you see the formal charge in nitrogen in structure 2 0. So, which options are incorrect? Only B and C options are incorrect. And next one, following the P versus V plot of a cyclic process 1 2 2 3 3 4 4 1 denoted as 1 2 3 4 respectively for a system of 1 mole of an ideal gas, assume that there is a heat exchange between system and surroundings only in 2 and 4. ओनली एंड 2 and 4 हीट एक्सचेंज हो रहा है, मतलब इसमें 1 and 3 हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है. जब हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो ये दोनों एडियाबैटिक प्रोसेसेस होगा 1 and 3. अब यहाँ प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब ये हो जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस. अब इसमें आप देख सकते हैं इन 2 and 4 डेल्टा एस इज 0, in 2 and 4 delta S is 0 and in 1 and 3 delta S is 0, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एस चेंज दैट मीन्स चेंज इन एंट्रोपी 0 होगा. ये आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस को. तो 1 and 3 में एंट्रोपी चेंज तो 0 होता है, लेकिन 2 and 4 में तो नहीं होगा. ठीक है. और 1 and 3 are isothermal and reversible? No, these are adiabatic. And in 2 and 4 change in internal energy of the gas is 0. इसमें ये देखो, ये process 2 and 4 isobaric है. In this process heat is exchanging and process 2 is isobaric heat absorption and process 4 is isobaric heat rejection, that means heat evolution. And if you see in 2 and 4 delta S is not equal to 0, and as I told you, as in process 1 and 3 these are adiabatic processes. Adiabatic process में heat exchange नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये adiabatic process है और इसमें ये डेल्टा S इक्वल टू 0 हो जाएगा. और 1 and 3 isothermal reversible process दिया है, no, it is adiabatic processes है. और फोर्थ वन इन 2 and 4 चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन आपको दिया है इसमें इक्वल टू 0. सो इन 2 and 4 चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज 0 दिया है, ये गलत है. तो आइसोबारिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 नहीं होगा. तो द करेक्ट आंसर ओनली. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट. थैंक यू. सी यू सून.